Hi, good evening. Can all of you switch on your cameras? So we'll do three problems on compound interest, and then we'll see some population increase, bacteria increase, decrease, and that's nothing different from compound interest. पूरा case same है. Are we ready? All of you ready? चला है? तो चलो. Okay, चलो. So थोड़ा सा recap कर लेते हैं. What was the formula? We used to use amount is equal to P into 1 plus R by 100 to the power n. ठीक है ना? मैं बोलता था आप K लगाओ, पर आपके कोर्स में जब है नहीं, so you'll get all problems of this type. P would be the principal, R would be the rate of interest, and once there is no formula for getting compound interest, so compound interest will calculate always as amount minus principal. Is that fine? ठीक है. And now they have removed compounded annually, quarterly. जो remove कर दिया वो क्या, बाद में जब पढ़ेंगे, when we'll do this again for term 2 there will be other schools who will be having this. That time again we will see in depth. Okay, चलिए एक problem करते हैं. Let's do. So find the compound interest. So let's write our question. Find the compound interest. So we write compound interest. Interest is CI. Children, I won't be able to speak that loud today. Hannah, am I, and Lakshan and all, am I audible to you? आज थोड़ा battery down है. Compound interest CI is equal to unknown. Okay, then it says find the compound interest. The rate of 10% per annum. The rate of 10% per annum. So our rate is shown by R, which is equal to 10% per annum, and the time is for 4 years. For okay, time is 4 years. Okay, this is a tricky problem, but let's do it. Time is 4 years, and the principal is not disclosed to you. ठीक है, ये मजेदार है. Principal P is not disclosed to you, so obviously you won't be able to calculate the amount. समझ में आ रहा है ना? आप कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल P आपको नहीं दिया है, लेकिन आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है. कह रहा है इसी प्रिंसिपल को अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में क्या लगाएं, इफ यू इन्वेस्ट दिस प्रिंसिपल ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, दैट इज हाउ मच? 4 years. टाइम कितना है बच्चा? 4 years. Then you are getting the interest of how much? 1600 rupees. You're getting the interest of 1600 rupees. How will you attack this problem? कुछ नहीं, इसमें 7 और 8 का ही नॉलेज है. See, we cannot use the formula directly because in the formula we know R, we know N, we know A. Time is given. Time obviously is Rn. हाँ, सिंपल इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? What is the formula for simple interest? P into R into T. P into R into T divided by 100. Now आपको दिया है कितना? 1600 is equal to P into the same rate 10%. टाइम कितना? 4 divided by 100. अब जरा P निकालिए तो. नहीं, आप करो, करके मुझे बोलो P कितना है. आज मुझे हेल्प करना पड़ेगा, मेरा दम कम है. P निकालिए बच्चों पहले. You will be able to find out P. आराम आराम से. $4,000 आ रहा है. चेक कर लें एक बार. ये 0 से ये 0 काट लेते हैं. 4 will divide 160 as 4 4s are 16, 0. So P का वैल्यू कितना हो जाएगा? P's value will be 40 into 100, which is 4,000. Very good. Did you understand? P is 4,000. अब now we can be able to put this formula. है ना? Understood now? You'll be able to put this formula. Now get me the value of. Get me the compound interest. To the power 4 है, लेकिन हाँ ध्यान रहे. कोशिश करते हैं. आ जाइए. To the power 4. So what will be our amount equal to? 4,000
into 1 plus 10 by 100 to the power 4. 10 by 100 कितना हो जाएगा बेटा? 4000 into, very good, 1 plus 1 by 10 to the power 4. ये 4000 into कितना हो जाएगा? 10, 10 plus 1, 11 by 10. ये कर लोगे? क्या मुश्किल है इसमें? आ जाए. 4000 into 10 into 10 into 10 into 10. Don't get afraid. चलो. Can we take out some zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agreed. 11, 11 is how much? 121 into 121. Okay, which is multiplied by 4 and divided by 10. 10 को लास्ट में रखो बेटा, 10 को लास्ट में रखो, so that you can just put a decimal. 10 को लास्ट में यूज करो. 121 into 121. इसको एक बार में मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा हिम्मत चाहिए. करें? आजा, एक बार में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं. 121 multiplied by 121. जब 1 होता है ना, इजी होता है. What is 121 multiplied by 1? 121. So 1, 12 carry over. 121 multiplied by 2 is 242. 242 plus 10, 252. Plus 2, 254. 254 का 4, 25 यहाँ रख लो. 121 into 1, 121. 121 plus 10, 131. Plus another 10, plus 5, बस. Divided by 10 है. 1 उससे गड़बड़ हुआ है. हाँ, into 4 हमने नहीं किया है. into 4 divided by 10. ठीक है. So 4 से कर लेते हैं. 4 1 4, 4 4 16, 1 carry over, 4 6 24 and 1 25, 2 carry over, 4 4 16 and 2 18, 1 4 1 4 and 1 9 divided by 10. So it becomes 9856.4. Now can you calculate the compound interest? You know the amount. Take out the principal. How much was the principal you got? 4000 निकाल लो इससे. क्या गलत हुआ है? कुछ ही गलत हुआ है. 14 4 52 है ना. हाँ, मेरे से गलती हो गया. तभी ठीक ही नहीं दे रहा यार. 4 1 4, 4 4 16, 4 6 24 and 1 25, 2 4 4 16 and 2 18, 1 4 1 4 and 1 5. Sorry बच्चा. हाँ, very sorry. 5856.4. तबीयत साथ नहीं दे रहा है. I actually wanted to do online, but I felt online will not help you all. So many students online doesn't help. Are we fine? Children from Phoenix, you pay more attention on this part. Comfortable? Okay. So we're now going to the next part. Population increase decrease wala. I'm rubbing this. Chalo. Is this fine? आगे चले. So next thing that you're going to see is population increase, decrease, bacteria count increase, decrease. That's very easy. Now look, the formula that you studied, since you are in CBSE, you have studied as what has the formula you have studied? You have studied how amount is related. Students in Cambridge who are in grade 9 will study the same formula. वो कैसे पढ़ेगा देखो इस फॉर्मूले को, और उसी से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा. Futuristic value
इसको हम बोलेंगे FV, समझ में आया? प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम बोलेंगे PV. Have you understood? Do you understand what is futuristic value? A value which will come out in future. आप सोचो, when you invest the principal, the amount you're going to get in future only, na? So amount is this. This in your CBSE is analogous to A. This is analogous to principal. Present value. Present value is the principal. Futuristic value आपको जो मिलेगा, समझ में आया? Okay. We see two more things out here. We see something called a beautiful earring. ये क्या है? Earring. And we also see what is called a between cycle, which is from Decathlon. As a Decathlon say, between cycle है आपका cycle. This earring is made out of gold. Okay. Both were purchased in 2024. We are in 2028. इसको हमने X में खरीदा, इसको हमने Y में खरीदा. 2028 में जब हम बेचेंगे, Y के ऊपर क्या असर होगा? वैल्यू नीचे आ जाएगा, इसका वैल्यू नीचे आ जाएगा, है ना? पर गोल्ड रिंग क्या होगा? इसका ऊपर जाएगा, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो इसका मतलब है दुनिया में दो तरह की चीजें होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग्स इन दिस वर्ल्ड. वन whose value increases, land, gold, shop value, है ना? And there are some things whose value decreases. जैसे फिक्स गुड्स होता है ना, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आईफोन हो गया. No one is going to buy your next iPhone at the same price. Let me tell you the best thing. Suppose your parent has purchased a brand new car. ये अभी तक रोड में नहीं आया है. Where is this car? This car is right now at showroom. Right now at showroom. Ribbon woven लगा हुआ है, अभी ये चला नहीं है. Before taking this car on road, legally you have to insure the car. Otherwise you are not allowed to drive in the road. The police can put a case on you. So you have to insure the car. ये गाड़ी की कीमत है, मान लो 14 lakh rupees. 1400,000. Have you understood? 1400,000. गाड़ी चला है अभी तक? ये अभी शोरूम में है. अब सब कुछ हो गया, इंश्योरेंस ले लिया. Now the car comes on road. Why do we insure? We ensure that अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, the insurance will pay us back. You know at what value the insurance guy will insure this car? 90%. How cruel the world is. ये गाड़ी तो उतरा ही नहीं रोड में. This car has not even come on the road. How much is it being insured for? 90%. मतलब ये गाड़ी उतरते ही अगर कुछ हो गया, तबाह हो गया, आपको कितना मिलेगा? 14 into 9. Are you getting it? You'll not get 14 lakhs. And every year the insurance will reduce the value. You may say, no sir, I keep it with proper glaze. These are called depreciable assets. ऐसे assets को हम क्या बोलते हैं बेटा? Depreciable assets. That's why the other day I told you, लोन लेके depreciable asset खरीदना long term में बेवकूफी होता है. Because एक तो आप लोन ले रहे हो और खरीद क्या रहे हो? वो चीज जिसका वैल्यू घटने वाला है. You understand? Whose value is coming down. Okay. ऐसे चीजों को हम क्या बोलेंगे? Depreciable assets. अच्छा, depreciable assets के कुछ एग्जांपल लेते हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स में आएगा. यूजुअली इंडिया जैसे कंट्री में पॉपुलेशन भी एप्रिशिएट हो रहा है, बढ़ रहा है. चाइना, वी हैव ओवरटेकन चाइना. आई होप यू नो China's population growth rate is now less than India. ठीक है? तो population. Then during the first hour of infection, like say I have got cold now, so definitely some bacteria or virus has gone inside me. So during the first hour now, is the virus increasing? Yes, the virus will increase. So we will say disease. ये भी growth दिखाएगा. Until and unless you show medication. Medication होने के बाद वो depreciate करना शुरू करेगा. That's how it happens. और क्या हो गया? Population. Then land price goes up. इसमें क्या आ गया? Plant and machinery. Plant does not mean the biology plant. Huh? Plant means the plant of Coca-Cola. Factory. You're selling a factory. When you want to sell the factory, nobody's going to. Let's suppose my table. No, sir, these are IKEA tables. I have maintained them so nicely. Tomorrow, say, suppose I decide I will no more teach. ये tables तो extra हो गए. इन्हें मैं बेचने जाऊंगा तो मैं इसका sticker price दिखाने से कोई खरीदेगा?
they'll say sir you have used them depreciable. So all fixed goods ये सब क्या होता है, depreciate करता है. Is this much concept understood? अब देखते हैं, जो चीज appreciate करता है उसके केस में futuristic value will be greater than present value, और जो चीज depreciate करता है वहां futuristic value will be less than present value. Have you understood? Clear? Nothing great. Now let us put our formula. Formula is very simple. What is the compound interest formula? Tell me. A is equal to P into 1 plus R by 100 to the power n. What is R? The growth rate. The growth rate. What is R? The depreciation rate. It can, so we can put R as G% or D%. D means the value is going down. इसका फॉर्मूला भी सिंपल है. फ्यूचरिस्टिक वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस माइनस R by 100 to the power n. प्लस करने से क्या होगा? दिस फिगर विल इंक्रीज, डोंट यू थिंक? इफ यू ऐड दिस फिगर इंक्रीजेस. तो प्लस किसके लिए लगाओगे? अप्रिसिएशन के लिए. पॉपुलेशन ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ, वायरस ग्रोथ, गोल्ड ग्रोथ, स्टॉक मार्केट ग्रोथ. माइनस किसके लिए लगाओगे? डेप्रिसिएशन के लिए. तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, दिस इज यू, व्हेन यू रीड द क्वेश्चन only try to read whether it's an appreciation or depreciation case. Based on that, you will use the formula of plus or minus. Have you understood this gist? This formula is nothing different than this formula. In fact, in Cambridge, they learn only one formula. Future value. ये तो पैसा भी हो गया ना. Future value, amount, is equal to present value into 1 plus R by 100. But in compound interest, we will always put plus. Why? पैसा बढ़ने वाला है, पैसा बढ़ने वाला है. अब मैं कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं. I'll just read some questions. You apply your common sense and you tell me whether this problem will be an appreciation problem or depreciation. Correct? चलो. Let's read some question. So that we understand whether हम problem. Question सुनो. हाँ, क्या हो गया? Again. The wrong thing is that you always get caught. अब देखो, when you called him, I'm in happy mood. Have you seen Munna Bhai MBBS? No matter what, say, ha, laughing therapy. I don't get angry. The population of a town is increasing at the rate of 5%. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? FV. तो आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए कितना इजी है. The population of a town is increasing at the rate of 5%. सुनते जाइए. What will be the population on the town on this basis after 2 years? मतलब n is equal to 2 after 2 years. If the present population is 16,000, so present value कितना है? 16,000. n का वैल्यू कितना है? 2. ग्रोथ रेट कितना है? 5%. प्लस या माइनस? अरे भाई जनसंख्या है, बढ़ रही है ना? The indisciplined nature of Bakul is, I'm putting a gap, at the rate of 5%. Yes. ये प्रॉब्लम अप्रिसिएशन होगा कि डेप्रिसिएशन होगा? Appreciation. So you understand now. Next question. The population of a village is 20,000. If the annual birth rate is 4% and annual death rate, देखो, एक विलेज में अगर जन्म हो रहा है तो मृत्यु भी तो होगा ना. Annual birth rate हो रहा है 4% and annual death rate is 2%. Calculate population after 2 years. कर पाएंगे? How will you do this problem? देखो कितने जन्म हो रहे हैं? 4%. 4% of what? Present value. कितने लोग मर रहे हैं? 2% of what? तो जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी? हाँ? 4% जन्म हो रहा है, 2% मौत हो रहा है. तो ओवरऑल व्हाट इज द परसेंटेज? 2% ओनली ना. तो 2% से एप्रिसिएशन का प्रॉब्लम करेंगे. Have you, who has not understood this problem? There is a village. The population of the village is how much kiddos? 20,000. Have you understood this? Shall we try? देखो ना, एक विलेज का पॉपुलेशन कितना है?
आज थोड़ा बेयर करो, आज सर एग्जाम्पल उतना मस्ती से नहीं कर पा रहे हैं, आज तबीयत नासाज है। ओके चलिए आते हैं हम एक विलेज में। ये विलेज का नाम क्या है साहब? लखीमपुर। क्या नाम है? हाँ ऐसे बोलने से समझ में आता है ना। लखीमपुर में बहुत लोग रहते हैं, मर्द औरत बच्चा लड़की बच्ची लड़का, ठीक है, ऐसे पॉपुलेशन है। इसकी पॉपुलेशन है 20,000, ठीक है 20,000। यहां पे बर्थ होता है, बर्थ होने से पॉपुलेशन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सो बर्थ इज टेकन एज एन एप्रिसिएशन केस। बर्थ होता है 4%। 4% मीन्स 4% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज दिस, डू यू अंडरस्टैंड? एंड along the same time there is again death कितना हो रहा है? death is a depreciation case, 2% of present value। तो ये प्रॉब्लम कैसा हो गया? a frog climbs 4 feet and slips back 2 feet. How many feet did the frog climb? 2 feet. So if you squeeze these two, you will say that there is overall a growth of how much? 2%. 2% is the growth. So what is the formula that we use? Futuristic value is equal to present value into 1 plus 4 by 100 to the power 2. I did not put minus. समझ में आया? And if you want to do it the donkey way, what way? Donkey way. बर्थ का 4% लेके 2 साल कैलकुलेट करो, डेथ का 2% लेके 2 साल कैलकुलेट करो, so you will get total people, and total people who became photo, reduce that from that, you'll get the same answer. सृष्टि समझ में आया? तो क्लियर? आई थिंक क्लियर नहीं है, समझे हो? ये थोड़ा सा खींचा हुआ प्रॉब्लम है। Any other type of problems that you have done in school? ये टाइप के प्रॉब्लम्स किए हैं? अच्छा ये है एक आध दो। So this is all about, here I would like to wrap up comparing quantities. My this thing remains open for all the children who have this as a part of your exam. Do not hesitate to come back. Do you have this as a part of your exam, Ritisha? Okay, do not hesitate to get back to me if you have any doubt. And for the other children, when it comes for the term 2, we will again study this in term 2. But that time we won't go that deep. तो फिर कोर्स ही खत्म नहीं होगा। Are we fine? तो चले क्यूब रूट में। हाँ रेट और टाइम फाइंड की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, आप कर पा रहे हो। एक ही तो चीज है, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन करना है। टाइम में आपको 2 इयर्स से ज्यादा नहीं देगा क्योंकि आप सिर्फ स्क्वायर रूट निकाल पाते हो। 3 हाँ और क्यूब रूट दे सकता है। 4 का टाइम नहीं देगा क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट 4th रूट, and that they will do if you have been very what to call very naughty in class, then the teacher will give that problem, थोड़ा सा रिवेंज के लिए देगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम जनरली कोई देता नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ तब तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में गलती है। ठीक है चले, so let's go to cube roots.